हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू आर रियली एक्साइटेड, राइट? फियर तो आप पीछे छोड़ दो, अब एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अब एग्जाम देंगे एंड वट एवर वी हैव वर्कड हार्ड ऑन, वट एवर वी हैव स्टडीड, it is time that we are going to see the results, right? So the state of mind should be very optimistic, positive. सेल्फ बिलीव होना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम। अगर आपने सेल्फ बिलीव छोड़ दिया ना तो आपके इतने महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। सो डोंट डू दैट, राइट? जिटरी होना, नर्वस होना एक्सेप्ट करिए, होता है। एवरीबडी गोज थ्रू दिस, यू आर नॉट अलोन। जो पिछले साल के टॉपर्स थे, उससे पिछले साल के टॉपर्स थे, और जो आने वाले सालों के टॉपर्स हैं, और जो आप हैं, सब थोड़ा सा एंग्शियस, नर्वस फील करते हैं एग्जाम में। दैट इज़ वेरी कॉमन। सो don't worry on it and just be focused on your performance. Just don't compare your performance, your result with your friend. तेरा कितना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, तेरा VARC कैसा चल रहा है, मेरा LRDI ऐसा चल रहा है। इससे कोई आउटकम तो निकलता नहीं है, देखिए, है ना? उसका LRDI कैसा हो रहा है, इससे आपको कैसे फर्क पड़ेगा? आपको तो आपका LRDI VARC कैसा हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा ना, इजंट इट? तो अब अपने पे ही फोकस करिए, अपनी एनर्जी को करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज करिए। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपने एफर्ट को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। कैट 2017 का जो स्लॉट 1 का VA पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट, लेट्स सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ऑल द पैसेजेस. We'll solve all the questions that have been tested in CAT 2017 slot 1. तो let's begin with the discussion. Again, I'll just step aside ताकि आप एक बार अच्छे से पैराग्राफ पढ़ सको, है ना? क्योंकि ये बड़ा कॉमन फीडबैक आता है कि मैम आप थोड़े से हट जाया करो, हम खुद से तो अटेम्प्ट कर लें। तो आप बिल्कुल खुद से अटेम्प्ट करो अच्छे से पैराग्राफ को, एंड देन वी कैन डिस्कस। सो मैप मेकिंग पे ये पैसेज था। सो आई होप यू हैव रेड इट। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और रीड कर लेना, ठीक है? चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर इन द वर्ल्ड इज अ बेसिक सर्वाइवल स्किल. सो व्हाट इज द बेसिक सर्वाइवल स्किल? तो बेसिक सर्वाइवल स्किल है कि आप ये समझ जाओ कि आप हो कहाँ पे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. Which is why we, like more species, come hardwired with specialized brain areas to create cognitive maps of our surroundings. So ultimately उसने कहा बेसिक स्किल क्या है कि आपको पता होना चाहिए where you are in the world, and then the author is trying to say that is the reason we are hardwired and we create maps of our surroundings. So where humans are unique, though with the possible exception of honeybees. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि humans unique है, और यहाँ पे जो exception हो सकता है वो honeybees हो सकती हैं. Is that we try to communicate uh, this understanding of the world with others. We have a long history of doing this by drawing maps. So how are we doing it? We are drawing maps. So how are we sharing this information? We are drawing maps. The earliest version yet discussed was called on cave on walls 14,000 years ago. Human culture have been drawing them on stone, tablets, papyrus, paper, and now computer screens ever since. तो जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, पहले तो ये प्रेशर अपने कंधों से निकाल दो कि भाई एक एक लाइन, एक एक वर्ड, वर्ड बाय वर्ड सब आत्मसात कर जाएंगे, सब अब्सॉर्ब कर लेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नो, that's a misconception. Any text that you are handling for the first time in your life is difficult to understand every bit in one go. So what should be the goal? The goal should be that keep your focus intact. Specific questions के लिए वापस जाओ और general questions को आंसर कर सको without revisiting the passage. ये 3 goals हैं. अब फोकस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? व्हेन यू आर रीडिंग इट, वी टॉक अबाउट अ टर्म कॉल मैपिंग. तो आपको जो भी वर्ड क्रूशियल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, क्रक्स लगता है, या आपको लगता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट राइट इट सो दैट वी नो वेयर टू कम. और ओवरऑल फ्लो ऑफ द पैसेज को समझने पे फोकस करो, राइट? और ट्रांजिशंस जहां भी आएंगे उनका स्पेशल ध्यान रखना है. येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, दीज वर्ड्स. तो यहाँ पर ऑथर ने कहा कि एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है कि हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, और इसलिए ह्यूमंस मैपिंग करते हैं. एंड
हमारे पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है जहाँ पे मैप क्रिएट हो रहे हैं और मैप कहाँ कहाँ पे ड्रॉ किए हुए मिले हैं उसको डिस्कस किया है. Given such a long history of human mapping, it is map making. It perhaps surprising that it is only within the last few hundred years that North has been consistently considered to be at the top. So what is surprising कि आप North को top पे रख रहे हो. Surprising that North is at the top. So this is surprising as per the author. In fact, for much of the human history, North almost never appeared at the top. तो सरप्राइजिंग क्या है कि नॉर्थ को टॉप पे रख रहे हैं, पर थ्रू आउट हिस्ट्री नॉर्थ कभी टॉप पे नहीं था. अकॉर्डिंग टू जेरी ब्रॉटन, तो जेरी ब्रॉटन का क्या ओपिनियन है, वी कैन कम वेन एवर द क्वेश्चन कम्स. He is a map historian. North was rarely put at the top for the simple fact that North is where darkness comes from. तो क्या ओपिनियन है कि नॉर्थ को कभी रेयरली टॉप पे रखा जाता था क्योंकि what was considered is north is where darkness comes from. तो पर्सपेक्टिव दे दिया. फ्लो ऑफ आइडियाज क्लियर है आपको कि हम मैप मेकिंग की बात कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स यूनिक रहे हैं, वो मैप बनाते हैं, वो शेयर भी करते हैं और 14,000 ईयर्स अगो डिस्कवर हुआ था कि मैपिंग शुरू है, कहाँ कहाँ मैप्स मिले. और क्या सरप्राइजिंग है कि थ्रू आउट हिस्ट्री यूजुअली नॉर्थ वॉज नेवर एट द टॉप. रिसेंट ईयर्स में नॉर्थ टॉप पे देखा जा रहा है, तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट्स रीड दिस. आप, मैं साइड हो गई हूँ, आप पॉज कर लेना अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, मतलब चाहिए ही होगा रीडिंग के लिए. सो यू कैन पॉज इट एंड रीड इट एंड देन सी द डिस्कशन. West is also very unlikely to be put at the top because West is where the sun disappears. तो वेस्ट पे भी नहीं करते और नॉर्थ पे भी नहीं करते. ये जॉन ब्रेटन ने कहा था. Confusingly, early Chinese maps seem to buck this trend. तो चाइनीज वाले क्या करते हैं, they are bucking this trend. How? But Broughton says even though they did not have compass at that time, that is not the reason they planned north at the top. Have we missed any slide? No, let's read this. No, we have not missed any slide. I've checked this, so let's read this. Confusingly, early Chinese maps seem to buck this trend, but Broughton says even though they did have compasses at that time, that is not the reason they placed north at the top. तो चाइनीज इस ट्रेंड को बक करते थे. एंड व्हाट इज द रीजन, ब्रॉटन इज एक्सप्लेनिंग. अर्ली चाइनीज कंपसेस वर एक्चुअली ओरिएंटेड टू पॉइंट साउथ. तो कैसा ओरिएंटेशन था, दैट दे यूज टू पॉइंट साउथ. तो जो अर्लियर चाइनीज कंपसेस थे विच वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर डिजायरेबल देन डीपेस्ट डार्केस्ट नॉर्थ. तो साउथ वॉज मोर डिजायरेबल एज कंपेयर टू नॉर्थ दैट वॉज एसोसिएटेड विद डार्कनेस. But in Chinese maps, the emperor who lived in the north of the country was always put on at the top. तो जो एम्परर था, जो रूलर होता था, वो क्या ट्रेंड था. तो व्हाट इज द ट्रेंड इन चाइना की जो रूलर था, रूलर को आप टॉप पे रख देते थे, राइट, हु लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री. सो रूलर वाज प्लेस्ड एट द नॉर्थ ऑफ द कंट्री. सो व्हाट वाज द रीजनिंग with everyone else as loyal subjects looking up towards him. So people used to look up to him. So that is the reason he was placed in the north, emperor. In Chinese culture, the emperor looks south. तो साउथ पे प्रजा रह रही है, एम्परर नॉर्थ पे है और एम्परर नीचे से प्रजा को देख रहा है एंड पीपल आर लुकिंग अप टू हिम. दैट्स व्हाट द स्टोरी इज. बिकॉज इट इज वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, इट इज अ गुड डायरेक्शन. सो व्हाट वाज द रीजनिंग ऑफर्ड, उसको यहाँ पर ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया है. North is not very good, but you are in a position of subjection to the emperor, so you look up to him, says Broughton. So North is not a very good position, but you are under the rule, so you're looking up to your ruler. Given that each culture has a very different idea. Okay, I'll just step aside. You can read this and you can pause this if needed. I will continue the explanation now. Given that each culture has a very different idea of who or what they should look up to, it is perhaps not surprising that there is very little consistency in which early maps pointed. तो कह रहे कि every culture had a different idea.
Every culture had a different idea. So in ancient Egyptian times the top of the world was east. तो इजिप्ट में क्या था, जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड था वो क्या था, ईस्ट था. तो इजिप्ट का ट्रेंड बता दिया. द पोजिशन ऑफ सनराइज. इस्लामिक मैप्स फेवर्ड साउथ. तो इस्लामिक मैप्स में क्या था, इस्लामिक मैप्स में दे फेवर्ड साउथ एट द टॉप. तो इजिप्ट में क्या था, इस्लामिक मैप्स में क्या था, और क्या रीजनिंग दी है, तो ईस्ट में था बिकॉज इट वाज द पोजीशन ऑफ सनराइज, और इस्लामिक मैप्स दे फेवर्ड साउथ एट द टॉप बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली मुस्लिम कल्चर्स वर नॉर्थ ऑफ मेक्का, सो दे इमेजिन लुकिंग अप साउथ टुवर्ड्स इट. अब क्रिश्चियन मैप्स फ्रॉम द सेम एरा, जो क्रिश्चियन मैप्स थे, अब क्रिश्चियनिटी में क्या ट्रेंड था उसको ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया. उसको मापा मुंडी कहते थे. पुट east at the top. So every religion, every culture had a different story and what they were putting at the top. तो इजिप्ट का, इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया. और क्या रीजनिंग दी, टुवर्ड्स द गार्डन ऑफ ईडन एंड विद जेरूशलम इन द सेंटर. So when did everyone get together and decide that north was at the top? तो अब सबकी मैप मेकिंग के हिसाब से the top was different, right? तो कब सबने डिसाइड किया कि north will be at the top? It is tempting to put it down to European explorers like Christopher Columbus and Ferdinand Magellan who were navigating the North Star. But Broughton argues that these early explorers did not think of the world like that all. तो कह रहे हैं कि मे बी इनको क्रेडिट देते हैं जो नेविगेट कर रहे थे लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार, पर ब्रॉटन इससे डिसएग्री कर रहे हैं. व्हेन कोलंबस डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड इट इज इन अकॉर्डेंस विद ईस्ट बीइंग एट द टॉप. तो ईस्ट बीइंग एट द टॉप क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलाइन होता है. Columbus says he is going towards paradise, so his mentality is from medieval Mappa Mundi, which is Christianity wala map. Right, we have got to remember, adds Broughton, that at that time no one knew what he was doing and where they were going. तो कह रहे लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, तो यू कैन नॉट से दैट दीज गाइज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग मॉडर्न इन मॉडर्निटी नॉर्थ एट द टॉप. सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आसान सा पैराग्राफ. तो मैप मेकिंग की बात हो रही है, फिर वो कह रहे हैं कि अभी रिसेंट ट्रेंड ये नॉर्थ को टॉप पे रखने का. अर्लियर डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में जो टॉप था वो वेरी करता था एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्टन बिलीफ. चाइनीज कल्चर में क्या था, वहाँ पर राजा नॉर्थ पे रहता था एंड यूज्ड टू लुक डाउन टू द साउथ, राइट, एंड जो उनके सब्जेक्ट्स थे दे यूज्ड टू लुक अप टू द नॉर्थ towards the emperor or towards the ruler. And then how did this idea emerge where north started coming on the top? So these two people जो mention किए गए हैं, कह रहे हैं कि इनको आप rightly credit नहीं दे सकते. ब्रॉटन यहाँ पे doubt raise कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तब लोगों को पता नहीं होता था कि वेयर दे आर हेडिंग टू एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. तो मे बी कोलंबस सेड दैट ही इज हेडिंग टुवर्ड्स पैराडाइज. तो वो मैपा मुंडी के प्रिंसिपल के हिसाब से ही हैड हिज ओन पर्सपेक्टिव, तो वो नॉर्थ स्टार को फॉलो कर रहे थे. इसको ऑथर थोड़ा सा ब्रॉटन इस पर्सपेक्टिव को लेकर डाउट रेज कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो पैराग्राफ तो आसान है. वीए के क्वेश्चंस स्लाइटली ट्रिकी थे, बट अगर 2017 के स्लॉट 1 के पैसेजेस की बात करो तो दे वर वेरी डूएबल टाइप के पैसेजेस, राइट. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. The question is saying which one of the following best describes what the passage is trying to do. ठीक है, so it's questions on an explanation. It's not questioning on an explanation, right? So this goes out. It corrects a misconception on the way maps are designed. Yes, that's what the paragraph is trying to. We will keep this. It critiques a methodology, not a methodology, right? How can you say there is one methodology which is doubted or critiqued upon? It explores some myths about maps. No, it is the map making, the entire process, how map making was the agenda, not on maps. So the correct answer choice is going to be B in this case. Simple question, आसानी से elimination करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे. Let's try this question. Read this nicely, try this. So earlier maps did not put north at the top for the following reasons, except north was considered to be the source of darkness. Yes, so goes out. South was favored by some emperors. No, right? तो वो तो south was favored by some of the emperors. Again, it's questionable. We will keep this as a possible answer choice.
ईस्ट एंड साउथ वर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रिलीजियस रीजन, तो उन्होंने इजिप्ट का एग्जाम्पल दिया है और इस्लाम का एग्जाम्पल दिया है और क्रिश्चियनिटी का पर्सपेक्टिव बताया है, तो ये डिस्कस्ड है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. East was considered to be a more positive direction. Yes, even that has been talked about, right? Because it was a position where sun came from, जैसे Egyptian culture में बताया है. So what will be the correct answer? B for this question. Let's come to the next one. Please try this. So early Chinese map placed not at the top क्योंकि वहाँ पे ruler था और the subjects could look up to him. That was the reason, right? If you feel the need, you can revisit the paragraph. The Chinese invented the compass. No. They wanted to show respect to the emperor. Yes. The Chinese emperor appreciated the winds from the south. ये recycled language है. Trap answer choice create कर दी आपके लिए. North was considered to be the most desirable direction. Again, no. So the best answer choice will be B. Right? Let's come to the next question. It can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan, तो आप जा सकते हो, set the precedent, तो कह रहे it is tempting but Broughton is doubting it, so they set the precedent, we can't say. वो कह रहे कि nobody knew what they are doing and where they going, so we can't say that. Navigated by the compass, no. Used an eastward orientation for religious reasons, क्योंकि Columbus कह रहा है he is heading towards paradise. So by the concept of Mappa Mundi, which was as per the map making strategy in accordance with Christianity. So yes, we will keep C. Navigated with the help of early maps, again gets eliminated. So C is the right answer. It can be clearly taken away from the description. Right? Let's take a look at the next question. Please try this. So which one of the following about the northern orientation of modern maps is asserted in the passage? तो बताया ही नहीं है, इनफैक्ट कोई क्लैरिटी नहीं दी. उसने कहा कि जो मॉडर्न टाइम्स में नॉर्थ का प्लेसमेंट टॉप पे हुआ, वो आप पॉसिबली कोलंबस को और एक दूसरा नाम लेके कह सकते हैं कि इनको क्रेडिट दे सकते हो. इट इज टेम्पटिंग, बट फिर ब्रॉटन ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो क्लैरिटी से इमर्ज करके नहीं आया कि नॉर्थ टॉप पे कैसे गया. राइट, लेट्स टेक अ लुक. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉट स्टेटेड इन द पैसेज. रोल ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, ये तो प्रेजेंट किया गया, माइट बी अ टेम्पटिंग आंसर, बट फिर ब्रॉटन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था. क्रिश्चियन मैप्स नहीं, अगेन क्योंकि क्रिश्चियन मैप्स में तो नॉर्थ कभी टॉप पे था ही नहीं, तो ABC eliminate हो गए. Biggest contributor is not stated in the passage. The reasoning is not provided. So what will be the correct answer? D will be the correct answer for this question. Let's come to question number 6. At times you get so lucky. It's a nice simple passage and you're having 6 questions out of it. Isn't it like so amazing? Read the question. So the role of natural phenomenon influencing map making. तो आप चाहो तो पैराग्राफ रीविजिट कर लेना. इस्लामिक मैप में अगेन देयर वाज रिलीजन का कॉन्सेप्ट, चाइनीज मैप में एम्परर का प्लेसमेंट था, क्रिश्चियनिटी में भी उन्होंने प्लेसमेंट बताई थी, जेरूसलम इन द सेंटर, तो वो वाला कहानी थी. इजिप्शियन मैप्स में उन्होंने कहा था बिकॉज ईस्ट, बिकॉज दैट्स वेयर द सन अपीयर्स फ्रॉम, कम्स फ्रॉम. तो नेचुरल फिनोमेना इन्फ्लुएंस्ड इजिप्शियन मैप्स, सो द करेक्ट आंसर चॉइस इज गोइंग टू बी A in this case. ठीक है जी. Now let's do the second passage. Let's read this. I'll just step aside ताकि आप अच्छे से read कर सको. I used a smartphone GPS to find my way through the cobblestone maze of Geneva Old Town in search of a handmade machine that changed the world more than any other invention. तो author कहीं पे navigate कर रहे हैं to find out a machine जिसने bring that brought about a change
than any other invention. So that has brought a solid change, right? So near a 13th century cathedral in this Swiss city on the shores of a lovely lake, I found out what I was looking for. So the author was looking for a Gutenberg printing press. तो author इसको ढूंढ रहा था. This was the internet of its day, at least as influential as iPhone. तो author ने यहाँ पे analogy create कर दी कि दिस वॉज एज इन्फ्लुएंशियल एज आईफोन. तो जहां पे भी एनालॉजी क्रिएट होती है, इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन के निकलेगा. कैट का फेवरेट ट्रेंड है. सो this was said by Gabriel D. Montomellon, the director of the Museum of the Reformation, toying matlab playing with the replica of Johann Gutenberg's great invention. Before the invention of printing press, it used to take 4 months up to a year to produce a single book. With the advance in movable type in 15th century Europe, one press could crank up 3000 pages a day. So how the change was brought about, right? So this talks about how the change happened. So just monk ko, it used to take 4 months to, up to an year to produce a single book, and how the things changed after the printing press came into the picture. ठीक है, आसान है, not really tricky. Let's move to the next paragraph. Please read this. I will step aside. Read it nicely. So, before long, average people could travel to places that used to be unknown to them with maps. Now, medical information passed more freely and quickly, diminishing the sway of quacks. The printing press offered the prospect that tyrants would never be able to kill a book or suppress an idea. So, what are the benefits? तो printing press आने के क्या क्या benefits हुए? The author is listing the benefits, right? Gutenberg's brainchild, printing press was Gutenberg's brainchild, broke the monopoly that clerics had on scripture, and later stirred by pamphlets from a version of same press, the American colonies rose up against a king and gave birth to a nation. So list of the advantages which were introduced after printing press that has been mentioned. So a question in the summer of this 10th century of the iPhone is, has the device that is perhaps the most revolutionary of all time given us a single magnificent idea? तो iPhone की अब 10वीं सेंचुरी हो गई है, तो अब 10th anniversary, not century, sorry, anniversary. So now this has raised a question कि क्या iPhone ने कोई एक इतना revolutionary magnificent idea दिया? तो ऑथर क्वेश्चन कर रहा है. नियरली एवरी एडवांसमेंट ऑफ द रिटन वर्ड थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो एडवांस्ड ह्यूमन काइंड. श्योर यू कैन से आईफोन चेंज एवरीथिंग. सो हाउ द आईफोन हैज ब्रॉट अबाउट द चेंज? तो कह रहे हैं कि श्योरली आईफोन हैज चेंज एवरीथिंग. By putting the world's recorded knowledge in a palm of a hand, it revolutionized work, dining, travel, and socializing. It made us more narcissistic, hear more of me doing cool stuff, and it unleashed an army of awful trolls. We no longer have the patience to sit through a baseball game without that reach to the pocket. And one more casualty of Apple selling more than a billion iPhones in a decade's time, daydreaming has become a lost art. So इम्पैक्ट ऑफ आईफोन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑथर दोनों ही डिस्कस करके चला गया. ऑथर इज स्लाइटली अनहैप्पी क्योंकि वो कह रहा है कि लोगों में पेशेंस नहीं रहा. डे ड्रीमिंग हैज बिकम अ लॉस्ट आर्ट. दिस हैज लेड टू एन आर्मी ऑफ ऑफुल ट्रोल्स. सो but it has definitely talked about some impact, positive impact of iPhone. Now you can read this. For all of that, I'm still waiting to see if iPhone can do what printing press did for religion and democracy. तो ऑथर को लगता है iPhone has not contributed the way immense contribution was done
by printing press for the religion and democracy. So he's still waiting. That means still not very convinced that iPhone has brought about that massive impact. So the Geneva Museum makes a strong case that printing press opened more minds than anything else. It is hard to imagine the French or American revolutions without those enlightened voices in print. So again, what revolutions happened, even that sort of credit is given to printing press कि उसकी वजह से जो minds enlighten हुए would not have happened without the printing press. Not long after Steve Jobs introduced his iPhone, he said that the bound book was probably headed for history's attic store. तो स्टीव जॉब का क्या ओपिनियन आया था, यहाँ पर लिख लेते हैं. क्वेश्चन आया कि स्टीव जॉब ने क्या स्टेटमेंट दिया था, तो वी कैन कम बैक एंड गेट आवर आंसर. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ इन ई बुक्स, something closer to the medium for Chaucer's volume has made a great comeback. The hope of iPhone and internet in general was that it would set free people in closed society. तो क्या hope था? It would, free people in closed societies. That was expected. But again, pay attention to the transition. The failure of Arab Spring, so Arab Spring could not succeed. ठीक है, and the continued suppression of ideas in North Korea, China and Iran has not borne that out. तो जो ऐसा था कि जहाँ पे क्लोज सोसाइटीज हैं वहां पे फ्रीडम आ जाएगी, तो ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स देके कहा कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ. Right, so this example of Arab Spring being failed and then North Korea, China, Iran में still people are suppressed. The iPhone is still young. It has certainly been one of the most important, world changing and successful products in history as Apple CEO. तो Apple CEO क्या कह रहे हैं कि अभी nascent stage में and it has had a great impact. But I am not sure if the world is changed for the better with the iPhone as it did with the printing press or merely changed. तो मतलब change for better is a different thing and it is just change. So here the author is doubtful that he is not sure whether it is just change or change for better. That means questioning कि iPhone ने उतना impact नहीं create किया जितना printing press ने किया. So he is a solid supporter that iPhone could not bring the change as was expected and printing press had a far more major impact in totality on the society. So the printing press has been likened to the internet for which one of the following reasons. So likened मतलब यहाँ पे analogy create की है, तो क्या reason से? It enabled rapid access. तो जैसे internet rapid access provide कर रहा है to the information, printing press ने भी actually यही किया. उन्होंने clerics का example दिया था, monks जिनको कितना time लग जाता था book लिखने में and how it brought about a revolution. तो we will keep A. ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड न्यू एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द पास्ट. दैट्स नॉट द रीजन फॉर क्रिएटिंग द एनालॉजी, सो बी गोज आउट. इट इंकरेज रीडिंग अमंग पीपल. ये तो बड़ी यूजलेस चॉइस है, ये तो आसानी से एलिमिनेट कर दोगे. इट गेव पीपल एक्सेस टू द इंटरनेट, एक्सेस टू पैम्पलेट्स. When was internet giving access to pamphlets? Again, a recycled language answer choice. So we will pick A as the right answer for this question. आसान, like I told you कि verbal ability के हमने questions करे थे. इसका वीडियो का पार्ट 1 है जहाँ पे 2017 के VA के सवाल करें, तो आपको लगेगा कि हाँ वो तो थोड़े से ट्रिकी थे, बट विद RCs दे आर रियली इजी. राइट, तो बैलेंसिंग होगी. आप को हमेशा ये देखना है कि what should be your pick which helps you fetch more marks, right? According to the passage, the invention of printing press did all of the following except. So promoted the spread of enlightened political view. Yes, so this cannot be the answer. Gave people direct access to authentic medical information, clearly stated है. So this cannot be my answer. Shorten the time taken to produce books. Yes, even this is stated. तो ये तीन तो मेरे आंसर्स नहीं हो सकते. उसने कहा है कि the invention of printing press did all of the following except. तो क्या नहीं करा?
तो अब ए बी सी तो करें तो बचा क्या डी, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से डी निकल आएगा, बट आप वेरीफाई कर सकते हो। इनेबल्ड पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क साइमल्टेनियसली, तो मल्टीटास्किंग का कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, डी विल बी द क्लियर आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीव जॉब प्रिडिक्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आईफोन। तो अगर आप जानना चाहो तो आप स्टीव जॉब वाले पैराग्राफ पे जा सकते हो, राइट। यू नो इट्स ऑलवेज अ वाइज थिंग, कोई हर्ज नहीं है, इनफैक्ट दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। तो यहाँ पर हम लिख कर आए थे मैपिंग में, स्टीव जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। इंट्रोड्यूस हिज आईफोन, ही सेड बाउंड बुक्स वाज प्रोबेबली हेडेड फॉर हिस्ट्रीज एटिक, तो ये पर्सपेक्टिव था। अब आप देखो कौन सा आंसर चॉइस क्लोजली अलाइंड है विद दिस स्टेटमेंट। सो पीपल वुड स्विच फ्रॉम रीडिंग ऑन द इंटरनेट टू रीडिंग ऑन देयर आईफोन। People would lose interest in historical and traditional classics. Reading printed books will become a thing of the past. So it's headed for attic, मतलब yes, तो printed books पे ही question किया है. Switching we can't say, right? Or would lose interest, again we can't say. Production of e-books would eventually fall. No. So what is the correct answer? C. देख रहे हो आप कितने easy questions हैं, मतलब 2017 में इस स्लॉट में तो कैट ने बिल्कुल ही मक्खन क्वेश्चंस दिए थे स्टूडेंट्स को। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। So I'm still waiting to see if the iPhone can do what the printing press did for religion and democracy. The author uses which of the following to indicate his uncertainty, right? तो ऑथर ने कहा था कि भाई आईफोन से क्या एक्सपेक्टेड था कि जहां पर यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइडेड होगा उन सोसाइटीज में विच आर क्लोज्ड। फिर ऑथर ने एग्जांपल दिया कि अरब स्प्रिंग और दूसरे कुछ कोरिया का और ईरान का जहां पर दिस हैज नॉट बीन अचीव्ड। तो ऑथर इज नॉट वेरी हैप्पी, वो कह रहे हैं कि देखो प्रिंटिंग प्रेस ने तो कितना कुछ करके दिया, आईफोन ने इतना मेजर कुछ किया नहीं, और जो एक्सपेक्टेड था वो भी अचीव तो हुआ नहीं है, right? So the rise of religious groups in many parts of the world, no. The expansion in trolling and narcissism, no, right? The continued suppression of free speech in closed societies, तो ऑथर का मेजर कंसंट्रेशन यही था। अगर आप टेक्स्ट पे भी जाते हो तो उसने क्लियरली स्टेटेड है कि आईफोन से एक्सपेक्टेशन क्या थी, जहां पे उसने एग्जांपल दिया है कि कोरिया का और अरब स्प्रिंग के फेल होने का, दैट इट वुड गिव पीपल द फ्रीडम, तो इट वुड, the hope of iPhone and the internet in general was that it would free people in closed societies, but the transition came, and then the author questioned this, that Arab Spring did not become successful, and there is still suppression of ideas in countries like North Korea, China and Iran. So again the iPhone is, you know, he's not happy with the way the expectation was with iPhone, and that has not been achieved, right? So we can take a look at the options now. So the continued suppression of free speech in closed societies, so absolutely as aligned with the text, we will keep see. The decline in reading habits, that's a useless choice. तो expectation तो hope कहाँ से था कि freedom of expression मिलेगी in closed societies, but that did not eventually happen. So the author is still suspicious and doubtful. Now let's take a look at the next question. Please try this. The author attributes French and American revolutions to be the invention of printing press because क्योंकि ideas propagate हुए थे, right? Maps enabled large number of Europeans, नहीं map कहाँ से आ गए? The rapid spread of information exposed people to new ideas on freedom and democracy, उसने कहा है it enlightened people, so that's how enlightenment would happen. It encouraged religious freedom, no. रेवोल्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम का कोई कॉन्टेक्चुअल यूसेज नहीं है. इट मेड अवेलेबल रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज थोड़ी दे रहे थे लोगों के भी ये करो, राइट? इट जस्ट ओपन देयर माइंड. सो अगेन दैट्स अ ट्रैप. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी. बट अगर आप देखोगे ना, अगर पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है एंड यू आर रिविजिटिंग वेरेवर एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली डूएबल. मतलब ट्रैप भी बहुत कम ही है, क्लियर एलिमिनेशंस दिख रहे हैं.
Let's take a look at this question. Please try this. तो द मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज इज दैट न्यू टेक्नोलॉजी, ऑथर तो अनसर्टन हो रहा है, ऑथर कह रहा है कुछ नहीं करा आईफोन ने, देखो प्रिंटिंग प्रेस ने कितना कुछ कर लिया है ना. सो सम एडवांटेजेस बट दीज आर आउटवेड बाय इट्स डिसएडवांटेजेस. नो, ऐसा कहीं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ. सो फार नॉट प्रूव्ड एज सक्सेसफुल एज द प्रिंटिंग प्रेस इन ओपनिंग पीपल्स माइंड. यस, तो ऑथर इसी पॉइंट को लेकर कंक्लूड कर रहा था पैराग्राफ को. बीन डिसअपॉइंटिंग, तो इट हैज चेंज सोसाइटी टू रैपिडली. नो, been more wasteful than, तो प्रिंटिंग प्रेस तो वेस्टफुल ही नहीं थी, तो मोर वेस्टफुल, नो सच कंपैरिजन. द क्लियर आंसर चॉइस दैट इमर्जेस आउट इज चॉइस बी. ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान पैराग्राफ था. आई एम श्योर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको ये पैसेजेस देख के. तो राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अगेंस्ट एन इंटरेस्टिंग वन, सो वी वुड रीड दिस. चलिए लेट्स रीड दिस. आपको और टाइम लग रहा हो पॉज कर देना वीडियो को. This year alone, more than 8,600 stores could close, according to industry estimates. Many of them, the brand name anchor outlets that real estate developers once stumbled over themselves to quote. तो कितने stores का close होने का approximation है? This number. ठीक है, stores could close. ठीक है, ऑलरेडी देयर हैव बीन 5,300 रिटेल क्लोजिंग्स दिस ईयर. तो इतने हो चुके. Sears Holdings, which owns Kmart, said in March, तो क्या बोला Sears Holdings ने, that there is a substantial doubt it can stay in business altogether and it will close 300 stores this year. So far this year, 9 national retail chains have filed for bankruptcy. So what is the statement coming for Sears Holdings that has been explained? तो मतलब malls और stores बंद हो रहे हैं majorly. Local jobs are a major casualty of what analysts are calling. तो major casualty या major harm क्या होगा? Local jobs. ठीक है, with only a hint of hyperbole, the retail apocalypse. Hyperbole is exaggerating. Since 2002, department stores have lost 4,48,000 jobs, a 25% decline, while the number of store closure this year is on pace to surpass the worst depth of Great Recession. So again, how the numbers are worrisome. The growth of online retailers meanwhile has failed to offset those losses. तो जो online retailers and जिनकी growth हो रही है, they are not able to offset those losses, balance those losses, with the e-commerce sector adding just 1,78,000 jobs over the past year. तो आप देख रहे हो लॉस ऑफ जॉब्स कितना ह्यूज है, और जो ई कॉमर्स ने कंट्रीब्यूट किया दैट इज नॉट compensating adequately. Some of these jobs can be found in the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the malls. ये हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा. Company helped shutter. So basically the situation is intense where so many markets are being closed, so many stores are being closed. So already information के हिसाब से there is a huge job loss, और जो e-commerce से jobs create हुए they have not been able to compensate adequately for the jobs that were lost due to shutting down of stores. ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते. Read this. Let's read this now together. But those are workplaces, not gathering places. The mall is both. तो मॉल क्या है? वर्क प्लेस भी है ऑथर के हिसाब से, और गैदरिंग प्लेस भी है, जबकि जो ई कॉमर्स वाले सेक्टर्स है वो सिर्फ वर्क प्लेस है. And in the 61 years since the first enclosed one opened in suburban Minneapolis, the shopping mall has
been where a huge swath of middle class Americans went for far more than shopping. तो बता रहे कि what was the intent? शॉपिंग के अलावा बहुत सारा मिडिल क्लास लोग वहां पे जाते थे. It was the home of first jobs and blind dates, the place for family photos and ear piercings, where goths and grandmothers could somehow walk through the same doors and find something they all liked. So how it was, malls were much more than a shopping place. That's what the paragraph is trying to explain. Sure, the food was lousy for you, and the oceans of parking lots encourage car heavy development, something now scorned by contemporary planners. But for better or worse, the mall has been America's public square. So, what is the conclusion? That it has been the public square where people have often visited, and there were multiple things that were happening at the malls. So what happens when it disappears? So अब malls अगर खत्म हो जाएंगे तो what will happen? Think of your mall or think of the one you went to as a kid. Think of the perfume clouds in the department stores, the fountain heads splashing below the skylights, the cinnamon wafting from the food court. As far as back in ancient Greece, societies have congregated. Congregated मतलब इकट्ठा होना. It comes from the root greg. तो greg group होता है. तो congregating is coming together around a central marketplace. In medieval Europe, they were outside cathedrals. So it's a place where social gatherings were happening. It was a gathering place, and what people used to do in malls, the entire list has been there, right? So now read this. For half of the 20th century and almost 20 years into the new one, much of America has found their agora on the terrazzo between Orange Julius and Sabaro, Walden Books and the Gap, Sunglass Hut and Hot Topic. ठीक है. So that mall was an ecosystem onto itself. तो mall author के हिसाब से author is very happy being in the malls ना, बड़ा pleasantly खुद को associate कर पा रहा है. तो वो कह रहा है कि it was an ecosystem, a combination of community and commercialism, peddling everything you needed and everything you did not. So magic, eye posters, wind catchers, Air Jordan. So the author is saying it was much more than just being a shopping place. Again, the same idea is being repeated, and he's saying that it was an ecosystem. A growing number of Americans, however, don't see the need to go to any Macy's at all. Our digital lives are frictionless and ruthlessly efficient. तो अब क्योंकि everything is happening digitally, तो अब author digital life पे आ गया कि जो हमारी digital life है ये क्या बन रही है? Frictionless and it's very efficient. With retail and romance available at a click, malls were designed for leisure, abundance, ambling. You parked and planned to spend some time. Today, much of the time has been given over to busier lives and second jobs and apps that left you swipe right instead of haunt the food court. Mall, says Harvard Business School professor Leonard Schlesinger, were built for patterns of social interaction. तो malls किसके लिए बने थे? Social interactions के लिए. अब author कह रहे हैं कि क्योंकि सब कुछ online हो रहा है, so this is losing the charm. And then the professor perspective is coming कि जो malls were constructed, they were constructed because there could be social interactions. तो what is the crux? पहले तो ऑथर ने कंसर्न दिखाया कि इतने स्टोर्स बंद हो रहे हैं, तो ऑथर इज वेरी वरिड क्योंकि देयर लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और कह रहे हैं कि जो ई कॉमर्स आए उसने भी उतने लॉसेस कॉम्पनसेट नहीं करे, राइट. देन द ऑथर इज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर आइडिया कि दैट अमेरिकन मॉल्स वर नॉट ओनली अ प्लेस फॉर जॉब for shopping. There were a lot of other things that were happening, and it was a place where social gatherings used to happen. And the author is showing disappointment कि अब सब कुछ तो online हो गया है, तो mall का culture खत्म हो रहा है. But again एक professor को cite करके कह दिया कि malls were designed for such a way so that social interactions could happen. Now let's take a look at the first question. Please try this. So what is the central idea of this passage? Closure of malls has affected the economic and social life of middle class America. It's not targeting just middle class America, right? So A goes out. The advantage of malls outweigh their disadvantages. तो advantage disadvantage तो कहीं compare ही नहीं किया है.
malls used to perform a social function that has been lost. Yes, so वो author कह रहा है अब सब कुछ तो आप इंटरनेट पे स्वाइप करके ही कर रहे हो. So the social function, that was the primary reason for malls to be constructed. That is what the author is missing badly. We will keep see. Malls are closing down because people have found alternate shops. So इसको reason out करने के लिए central, that's not the main idea. Yes, malls are closing because people are switching to e-commerce, but that's not the major idea of discussion, right? So please see what will be the correct answer. C in this case, right? Let's come to the next question. Please try this. Why does the author say in paragraph 2 the massive distribution center Amazon has opened across the country, often not too far from malls, the companies help shutter? क्या आयरनी है ना. कैन यू सी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस की not far from the malls the company helped shutter मतलब close, so that's an irony, right? So we will keep this to indicate mails and distribution centers are located in the same area. No, it was to tell you that जिनके businesses shut किए थे उसी के पास उनके Amazon के distribution centers खुल गए हैं, right? To show that Amazon is helping certain brands go online, nonsense choice. To indicate shopping habits थोड़ी indicate कर रहे हैं. So what is the correct answer? A. To tell you the irony कि वहीं पर distribution centers हैं, उनके नजदीक जो malls अब बंद हो गए हैं. So the author is clear, somehow indicating that due to things happening online, the mall business has been negatively impacted, which is true otherwise also, है ना? Take a look at the next question. Please try this. In paragraph 1, the phrase real estate developers once stumbled. तो ट्रांजिशंस आपको कहती हूँ ना इंपॉर्टेंट है, मतलब once stumbled and now it is not happening, यही तो आइडिया इन्फर करना चाह रहे हैं. Suggest that they took brand name anchor outlets to quote no longer pursue brand names. Earlier they were doing it, once stumbled, now they are not doing. We will keep B. Malls are closing down because people have found. That's not what the statement is conveying, right? Please stick to the statement, answer the question. So that's not aligned to the question. Collaborated with one another to get brand name, no, again goes out. But useless choices hai na. B will be the right answer. Take a look at the next question. The author calls the mall an ecosystem onto itself because, so why it was an ecosystem? Because people can do multiple things there, no? It was a gathering place. So people of all ages from all walks of life went there, no. People could shop and eat, no. It was commercial as well as gathering place, right? देखिए उसने शुरू में ही एक जगह यहाँ पे clearly discuss किया है कि it was both. You'll go back to the text. Yeah, the mall is both. It is a workplace, it's a gathering place, and it is an ecosystem, and everybody was participating. Everybody had something to do there. So people used to go to do other things also apart from shopping. So what are the choices that we have? It was a commercial space as well as a gathering place. So we will keep this. It sold things that were needed as well and those who were not. So that doesn't answer why it was an ecosystem. So C will be the correct answer choice, right? Let's come to the next question. What is that? Please try this. Authors say that mall had been Americans' public square because everybody used to gather there, right? It was a place of social interaction. So malls did not bar anybody, no. Malls were a great place to shop, no. That is not the reason why it was a public square. It was a public square because there was a lot of social interaction happening. Malls were a hangout place where families grew close to each other. This we can't comment.
Malls were so again, by process of elimination, what is the choice that we have? Malls were a great place for everyone to gather and interact. So it's what the social gathering place, a place where everybody used to interact. Let's take a look at this question. The author describes perfume clouds in the department stores in order to take you back to the memory lane, right? Create a picture, bring you back there. So evoke memories by painting a picture, yes. Describe the smells and sights, no. Emphasize that all brands were available, no. Show that mall smelled good because of various stores and food court, nonsense choice. So A is the right answer. Okay, so this brings us to the end of the discussion. I hope you found the video helpful. तो अब तो आरसी से बिल्कुल घबराना नहीं है. You can see they were so doable, so manageable. Just keep working hard, believe in yourself, and go with the faith that you will be able to do extremely well in the exam. All the best, Vijay Bhav.